function. Give a round of applause, please. In 2008, a 9-year-old boy called Cassidy Megan, suffering from epilepsy, decided something. He said, I want to spread the awareness of epilepsy and disability. And he decided to use March 26, 2008 as Purple Day. Why purple? Because purple is the color of lavender, which is the herbal treatment of epilepsy. And that gave birth to the Purple Revolution, which has taken 17 years to reach this magnificent stage. Remember, there are two clauses in the English language, but and in spite of. At Purple Day, we celebrate the word in spite of. Cassidy Megan could have said, I want to spread disability awareness, but I have epilepsy. But he did not say that. He said, in spite of having epilepsy, I want to spread the awareness of disability. Michael Phelps said, he didn't say, I have ADHD, but I can't swim. He said, in spite of having ADHD, I want to swim. And that is the spirit of the Purple Fest. So please give a big round of applause and let's celebrate the day in spite of, instead of but, for this Purple Day and this Purple Fest. Let's start off this event with something very auspicious. There are 5 elements: earth, fire, water, air, and the ether or the sky. But there is only one element which always goes upwards, which always burns all impurities, and that is fire. To celebrate the purity of this event, to celebrate the human aspiration of always going upwards, I would like to call on stage the Commissioner in the Office of the State Commissioner of Empowerment of Disabilities, Shri Guru Prasad Pavaskar, to invite the dignitaries on stage. Let me call on the dignitaries on stage. The Chief Minister, Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant. Please give him a big round of applause. Shri Virendra Kumar, the Union Minister of Social Justice and Empowerment, Government of India. Please give him a big round of applause. Shri Ramdas Athwale, the Minister of State for Social Justice and Empowerment, Government of India. Please give him a big round of applause, please. Shri Subhas Paldesai, the Minister of Empowerment of Persons with Disability, Government of Goa. Sadanand Tanwade, Member of the Rajya Sabha. Please give him a big round of applause. Please, please, this is Purple Fest. In spite of all your tiredness, you have to keep clapping. Shripad Nayak, Shri Shripad Nayak ji, the Minister of State for New and Renewable Energy, Government of India. Rohit Mantri, the Mayor of Goa. Please give him a big round of applause. Shri Shombi Sharp, the UN Resident Coordinator in the Government in India. Shri Rajesh Agarwal, IAS, the Secretary in the Ministry of Empowerment of Persons with Disability, Government of India. Shri V. Kandavelu, the Chief Secretary in the Government of Goa. Shri Prasanna Acharya, the Secretary in the Ministry of Empowerment of Persons with Disability in the Government of Goa. Srimati Varsha Nayak, the Director in the Department of the Empowerment of Disabilities in the Government of Goa. And last but not the least, Mr. Taha Hazik, the Secretary in the Office of the Commissioner of Disabilities, Government of Goa. Also inviting on stage actor Lilliput, who is with us, Prathamesh Sinha, who is with us, MLA Daji Salkar, Premen Shet, Sunilji Devdar, and all the other dignitaries, Dr. Chandrakant Shetye.
Where is the mic? The lighting. Give me the mic, yeah. It's not. माइक किधर है? नहीं ये यूज नहीं है, ये बराबर नहीं है. The lighting of the lamp is happening. Please give them a big round of applause. Actually, दो hand mic लेके आइए ना stage पे. How are you? I am great, sir. CM. How are you? CM. CM. आप अपने आंसू याद हाँ, कीजिए. नहीं. सर मेरे को आपके साथ फोटो निकालनी है. बिल्कुल निकाल लेंगे. No Thank you, problem. thank you, sir, thank you. He is clicking the photo. क्या? कौन ले रहा है? आगे वाला ले रहा है. हाँ हाँ. Thank you. चलो ले लिया उसने. Thank you, sir. Thank you. Okay. After the lighting of the lamp and burning of all the impurities, let me give you some inclusion guidelines. There will be audio description for whatever's happening on stage for all the visually impaired people. There will also be sign language interpretation for all the people who have any sort of hearing impairment. You have volunteers. You will also have volunteers who will help you and guide you throughout the event whenever you want to go to the restroom, etc. Now let's welcome all our beautiful guests with flowers, which is said to be the poetry of God. So we'll invite Miss Anuba of DIAG to give the floral tribute to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. I would like to also call Mrs. Sandhya Kaloge to give away the floral tribute to the Union Minister of Social Empowerment and Justice, Dr. Virendra Kumar. Srimati Sandhya Kaloge, please. I would also like to call Srimati Vinita Sharodkar to give away the floral tribute to the Minister of State for Social Justice and Empowerment, Shri Ramdas Athwale. She's interesting. Yes. I would like you to get to know her. Get to meet her. I would like to call Ms. Shanti Raghavan to give away the floral tribute to the Minister of State for Empowerment of Persons with Disability, Government of Goa, Subhash Valdesai. Very feminine. I would like to call upon Mr. Arman Ali to hand over the floral tribute to Sadanand Tanwade, Member of Rajya Sabha. I would also like to call Mr. Homyar to give away the floral tribute to the UN Resident Coordinator, Mr. Shombi Shah. I would like to call upon Mr. Prakash Kamath to give away the floral tribute to Mr. Prasanna Acharya, please. Kavya.
I would like to call Mr. Ritesh to give away the floral tribute to Maharaj, please. To Rohit Mansraj. I would request Miss Vinita to give it away to the Mayor, Rohit Mansraj, please. Really? I would request Sri Guru Prasad Pavaskar to give away the floral tribute to the actor Lilliput, please. Request Ms. Srimati Varsha Nayak to give away the floral tribute to Sunil Devdas. After so much of flower, let's come back to earth. Some more flowers are still left. We are still not back on earth. So we'll request Sri Guru Prasad Pavaskar to give the floral tribute to Reginaldo and to Prathamesh. Okay. I'm taking instructions from everybody because the flowers are not ending, so please bear with me. We have given already, just mention. Taji, Salkar and Premendra Sheth. Taji, Salkar. Premendra Sheth also was given the floral tribute by Daji, so okay. I request all the dignitaries to take their seats in the audience so that we can begin the formal function. After that shower of flowers, let's get into one of the most important part of this particular session. I request all the dignitaries to please sit in the audience so that we can begin the formal function. Come this side, Kavya. I had repeated the inclusion measures. I'll repeat them once again for all of y'all. Audio captioning will be done for all visually impaired. Sign language interpreters are there for all the hearing impaired. There are ramps for each one to access the places in the most easy manner, and there are also volunteers who will guide you throughout this event. So please feel free. I request the audience sitting in the first row to vacate the chairs for the dignitaries, please. I also request all of y'all to download the International Purple Fest Goa app, and you will have audio description throughout the event for whatever is happening on stage. Let's begin the event with the welcome address
by a person who symbolizes energy, empowerment, and enthusiasm. If you were wondering why do you spell the word woman as W-O man, because she really doubles her enthusiasm, doubles her energy, and doubles her empowerment wherever she goes. We are going to welcome on stage the Director of the Ministry of Office of Empowerment with Disabilities, Government of Goa, Srimati Varsha Nayak. You have Purple Rain, that is Varsha. Here we have another Varsha who's going to pour her enthusiasm and excitement onto you all. Please welcome her with a big round of applause, please. Namaskar. Namaskar and a very warm welcome to each one of you. We have gathered here today not merely to attend a festival, but to be a part of a movement that redefines how the world sees ability, creativity, and community. To quote George Dean, inclusion is not bringing people into what already exists. It is making a new space, a better space for everyone. And that is exactly what Purple Feast stands for. Creating spaces where everyone belongs, where every voice matters and every story is celebrated. It is with immense pride and great joy that I welcome you all to the third edition of International Purple Fest here in the beautiful land of Goa, a state known not only for its scenic beauty, but for its openness, its diversity, and its boundless spirit of celebrations. We are greatly privileged to have with us today our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, a visionary leader whose unwavering commitment to empowerment continues to guide our journey towards an inclusive and just society. Sir, your leadership truly embodies the spirit of Vikasit Goa, where progress leaves no one behind. We also extend our heartfelt welcome to Honorable Union Minister of Social Justice and Empowerment, Dr. Viren Kumar, a true champion of inclusion, whose leadership reminds us that empowerment is not just a policy, it is a purpose in action. A warm welcome to Dr. Ramdas Athawale, Honorable Minister of State for Social Ministry and Empowerment and Justice. His energy and poetry has given rhythm to the movement of rights and dignity. We also welcome Sri Sadanand Seth Tanawade, Member of the Rajya Sabha, a proud Goan whose steadfast support reminds us that accessibility begins at home. Sri Rajesh Agarwal, Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disability, Government of Goa, Government of India, a leader who turns ideas into impact, ensuring accessibility becomes not a checkbox but a culture. Mr. Sombi Sharp, United Nations Resident Coordinator in Goa, our global friend of inclusion, reminding us that Goa goes purple, the world smiles a little brighter. So, you said, Goa mein aana hai. And sir, that has got us 12,000 plus registration across 47 countries. Thank you. Sri Subhash Fardesai, Honorable Minister of Social Welfare, Government of Goa, the pillar of this movement, whose compassion and commitment has transformed inclusion from an idea into everyday reality. I also welcome Premendra Sheth, Sir, Shabaji Sheth, Sir, Rohit Monserrat, Lilliput, Reginaldo, Sir. Yes. I also welcome Sri Prasanna Acharya, Sri Guru Prasad Pavaskar, and Taha Aziz, the trio that had truly become a heartbeat of accessibility of Goa. In fact, welcoming them to Purple Fest almost feels like inviting people to their own family. After all, they are the hosts, the planners, and the proud parents of this beautiful celebration. And today, the entire family has gathered here to share the joy. I also extend a warm welcome to all the dignitaries on and off the dais, our valued partners, Disability Alliance of Inclusive Goa, GAD, Goa Special School Association, Enable India, Saksham, Brotherhoods, Rising Flames, Bookshare, Tata Steel Foundation,
our international and national delegates, and the 21 incredible Purple ambassadors and our friends from the media. You are the true heartbeat of this movement. Your courage, creativity, and commitment continue to inspire us all. From thought-provoking panel discussion and inclusive art exhibits to technology showcases and vibrant, colorful performances, the Purple Festival truly celebrates the power of possibility. The first edition was a historic milestone, a spark that lit the flame of inclusion across India. It reminded us that inclusion is not charity, it is equality in action and a celebration of a human spirit. Every year, the festival grows, not in size, but in spirit, ideas, and impact. The theme this year, Universal Design and Shifting Narratives, capture the essence of this journey. It represents our shared belief that accessibility is not just special treatment, it is about thoughtful design, equal opportunity, and changing mindset. And this vision goes beautifully with the dream of our Honorable Chief Minister to build Vikasit Goa, where every citizen have a space to grow, contribute, and thrive. Let this festival be more than an event. Let it be a reminder that every human being has a right to dream, to speak, to create, and to belong. Together, let us make this International Purple Fest an unforgettable celebration of inclusive accessibility and improvement. Thank you all for being there. Let the celebration begin. Jai Hind. Thank you, Varsha ma'am, for that amazing welcome address. You told us not only that, you not only thanked everybody, but you also told us what Purple Fest is all about. And remember, Goa is a beautiful place. The only naval museum, air naval museum in Asia is situated in Goa. Goa is also the second richest state in India with the GDP. So if you make some good friends and marry some good Goan girls or boys, you will become rich. So anyway, let's come back to the point. We are going to have an orientation of the stage through a video for all the visually impaired people. So please look at this wonderful video on the orientation of the stage. Yeah. Yes, Kavya, what else you wanted? One is that speed. What is only one thing? What? The MC is also on my right side, bringing warmth and energy. Hello and welcome. I'm the stage and facing all of you. Right in front of me, dignitary seats are arranged in the first four rows. To my left and right, there are two sign language interpreters, one signing in Indian Sign Language and the other in International Sign. The MC is also on my right side, bringing warmth and energy to the event. At the other end, the Purple Fest branding is placed near the console. At my center, a large screen displays the names of each speaker and the performances, and there is another screen for live captioning. To my right, there are ramps to access the stage, and accessible washrooms are available nearby. Volunteers are also present around the venue to assist everyone. Let's come together, celebrate this moment, and have a wonderful time. Hello and welcome. I'm the There was a boy who was asking his elder brother, why do we always say ABC, ABC? Why don't we say ACB? And the elder brother told the younger boy something very interesting. He said, if you want to be, only then you can see. First you have to be, then you have to see.
So let us be a little inclusive and see a wonderful dance conducted and performed by children of special schools across Goa. These children have been trained by the Shamak Davar Institute. So please give these special children a big round of applause and let's be to see. For people with vision impairment, the audio description of the dance or any visuals on stage will be available on the International Purple Fest app. The audio description for people with vision impairment will be available on the International Purple Fest app. Thank you. सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को मुंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन नित्य दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव
फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहना दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोया 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 मोया। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। A round of big round of applause for these amazing kids. Please give them a big round of applause, please. Oh, a standing ovation for them, please. Fantastic job. Great. The entire theme was based on universal design and shifting of narratives. So can we shift just a little bit of our narrative? And let's move on. Okay, many of you all are wondering how the audio description will be done. So we are just showing you a glimpse of the app of how the audio description is done. Yeah, once the children move out of stage. The Chief Minister is taking a picture with these amazing children on stage. The Commissioner of the Office of the State Commissioner of Disabilities has also joined them. I request Srimati Varsha Naik to also join the photograph. The Minister of Social Justice and Empowerment, Government of Goa, Ministry of Disabilities, Sri Subhash Valdesai has also joined them on stage for a wonderful photograph. I do not.
I think there's a purple pen, sir. Durga was saying after there's a purple pen video to be played. After that, that is for the commission. How to enable it on the app? How to enable? How to use the audio description on the app? We'll be playing a video now on how to enable the audio description on the app. So please, all those people with visual impairment, download the IPFG app and enable the audio description. Just say this. Bal Kalyan Samstha. Just take a peek of this. Shahnai Chowkada in the starting was given by There is a search bar above. Search for Purple Rain. Yeah. Yeah. Double We tap would on also like Purple to Rain. thank all the students with disability from Double the Bal tap on Kalyan Pur- Samstha who actually played the Shehnai Vadan at the beginning of the session. Bal Kalyan Samstha, Bal Kalyan Samstha, Pune. Pune. Double tap on Purple Rain. Double tap on Purple Rain and select. List of events comes. Double tap on your preferred event. For example, now performance by Vishwas VK I am double tapping on. There is a join text description button. Double tap on that. Here there is no description yet right now. Once the description starts, that is when the show is live, you will get the description here. Enjoy the experience. Stand here and invite. So you can move, we don't need it. As we saw that wonderful dance on universal design and shifting of narrative, there was a boy who was asking his father, the father was asking the boy, how much is 8 multiplied by 9? So the boy smiled and said, Daddy, 68. Immediately the father was so happy, he gave him a chocolate. Another man who was watching by said, why are you giving him a chocolate? 8 multiplied by 9 is 72. The father said, no, yesterday he was saying 65, today he's improved to 68. Slowly he'll improve to 72 also. And that type of father figure who keeps encouraging us, whom I met 2 years back and always been a source of encouragement and a pillar of strength behind the Purple Fest, is the State Commissioner in the Office of Persons with Disability, Shri Guru Prasad Pavaskar sir. I would request him to please come on stage and talk us through the journey of the Purple Fest. Please give him a big round of applause. Thanks, I'm next to you. I saved your time. Namaskar, Sagyan Yokar. A very warm welcome to everyone. It is my proud honor and privilege to extend a heartfelt welcome to all our dignitaries, partners, volunteers, participants and friends from across India and world. A special greeting to our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Dr. Virendra Kumar, Union Minister for Social Justice and Empowerment, Shri Ramdas Athavaleji, Minister of State, Shri Subhas Desai, Honorable Minister for Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Shri Sadanand Shet Tanawde, Rajya Sabha Member of Parliament, Shri Rohit Monserrat, Mayor of Corporation of City of Panjim, Dr. V. Chandravelu, Chief Secretary, Government of Goa, Shri Rajesh Agarwal, Secretary, DPWD, Shri Prasanna Acharya, our partners, Mr. Shombi Sharp, and all other esteemed officials and guests present here today. From the bottom of my heart, I extend my deepest gratitude to each one of you for being part of this beautiful journey. Your guidance, support, and participation make this festival what it is, a celebration of inclusion, empowerment, and the human spirit. Purple Fest
is truly by the people, for the people, and of the people. Every track is planned with care, love, and purpose. Months in advance, keeping in mind the lives it will touch. It belongs to every person with disability, every volunteer, every NGO, every government department, and every one who has given their time, energy, and soul to make this happen. I still remember 3 years back sitting in Sanjay School in August 2022 with Taha and our small but passionate team wondering how the Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities could do something truly unique. We held brainstorming sessions with NGOs, our office, and of course, our guide and mentor, Honorable Minister Shri Subhash Desai. Some of those sessions felt like solving a Rubik's Cube blindfolded, but slowly an idea began to take shape, and that idea became Purple Fest. For me, Purple Fest is more than an event. It's an emotion, it's the heartbeat of an inclusive Goa. Every year, we see this community, persons with disabilities, families, volunteers, NGOs, and government come together with unstoppable energy. And there are sleepless nights and moments of panic. But when I see the smiles, the cheers, and the sense of belonging in your faces, I know it's worth every bit of it. My biggest treasure from Purple Fest is the people, the friendship, the bonds, the growing family. Every year, my circle grows wider and warmer. Purple Fest may last just for 3 or 4 days, but for many of us, it's a lifetime of connection. Let's go back to the Purple Fest 2023. Over 5,000 delegates and 50,000 visitors joined us, making it the first time that all 21 disabilities under the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 were represented, including individuals with spinal cord injuries. It was also the year that gave birth to our powerful ambassadors, champions of inclusion who carried our message far, wide, and strong. From inclusive sports and art exhibitions to the vibrant Jagruti Mela, every activity was designed to empower, celebrate, and connect. I vividly remember a young artist performing and the entire audience, both the mainstream and the disability communities, sat in awe. That moment reminded us all that talent doesn't need translation, it only needs recognition. We introduced sign language in music, audio description for performances, made venues completely accessible and open conversations on invisible disabilities. Parents groups, special schools, NGOs, corporates, and government departments all came together, an ecosystem of empathy and innovation. By 2024, the fest had grown even bigger, with over 8,000 participants from across India and abroad. We launched wheelchair-accessible e-rickshaws, inaugurated the Spinal Cord Rehab Center and the Prime Minister Divyansh Kendra, and distributed over 3,000 aids and appliances through LMCO's Prime Minister's Divyansh Kendra. And the impact wasn't just social, it was an economic. In the first year, Purple Fest generated almost 5 crores of business in just 3 days. The next year, the number rose to almost 15 crores over 5 days. Hotels, restaurants, and tourism operators across Goa are now realizing that accessibility is not charity, it's smart economics. This is the purple economy in action. Providing an inclusion and prosperity go hand in hand. Purple Fest has sparked a systematic change, infrastructure has improved, policies are evolving and mindsets are shifting. The mainstream and the disability communities now come together in sports, art, and everyday life. We are not them and us anymore, we are one community. Purple Fest is possible because of people like NGOs who plan activities, the volunteers who work tirelessly, and my incredible office team. My heartfelt gratitude to Varsha Naik and her staff, the backbone of this year's fest, whose dedication keeps the spirit alive every single day. I also wish to express my deep gratitude to Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for his vision and gift to Goa, the establishment of the Department of Persons with Disabilities, focusing purely on disability inclusion. This too is a legacy of Purple Fest. Every time we take a proposal to him, he thinks 10 steps ahead and tells us what else can be done. That is his commitment to this sector. I would also like to thank my friend, mentor, guide, and go-to person, Shri Subhash Desai. For him, Purple Fest is very close to his heart, a family event. He gives time, energy 24/7 to ensure everyone experiences this space fully. If you see most of the spaces made accessible, it is his vision.
Thank you, sir. Thanks to Entertainment Society of Goa for ensuring the space is accessible and inclusive. A special mention also to our collaboration with the United Nations and the Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Their partnership has made this movement stronger, more global, and more impactful. Today, Purple Fest is no longer just an event. It's a movement. It has transformed Goa and inspired the entire nation. States across India are now planning their own Purple Fest. Together, we are shifting the narrative from disability to ability, from sympathy to opportunity, and from awareness to action. As we step into Purple Fest 2025, themed universal design and shifting narratives, let us continue to lead with empathy, innovation, and unity. Purple Fest is not just a color, it is a mission, a mindset, and a movement. Together, we are transforming Goa, transforming India, and transforming the way the world sees ability. Thank you for being part of this incredible journey. We are indebted to each and every one of you who has been part of this journey so far. Let's continue to dream, to include, and to celebrate. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. And now, let us watch the incredible journey unfold. Please play the video. Goa, a land of community and connections. But for years, persons with disabilities remained invisible in systems, policies, and conversations. To change this, the Goa State Commission for Persons with Disabilities was formed. The Goa State Commission for Persons with Disabilities is a quasi-judicial body with a clear mandate to protect rights, resolve grievances, and guide the state towards true inclusion. The commission worked hard, but recommendations alone were not enough. In a historical decision by Government of Goa, the Department for Empowerment of Persons with Disabilities was formed to solely focus on action and implementation. Today, our work spans many areas, that is education, accessibility, assistive devices, sports, culture, and awareness. From making government offices accessible to giving mobility aids and to host para sports and art festival and conducting awareness programs with all the government departments to ensure that they understand the rights of persons with disability, we want every person to be included. Together, the Commission and the department began shaping programs that went beyond rights on paper. The focus turned into everyday needs: education, mobility, dignity, and livelihood. The vision led 5 flagship projects. Inclusion starts with awareness. From schools to hospitals, from bus drivers to airport staffs, training and sensitization have begun changing mindsets. Being a person with disability मतलब मेरा एक्सीडेंट 2003 में हुआ था. एक्सीडेंट हुआ लेकिन अभी मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी बना 2019, 2021. इतने लॉन्ग पीरियड तक मुझे मेरे ही राइट्स कुछ भी मालूम नहीं थे. जैसे जैसे कमिश्नर ऑफिस से इंटरेक्शन हुआ, वहाँ के और भी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो ऑफिस के लिए काम कर रहे थे उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो धीरे धीरे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, उनके राइट्स क्या होते हैं वो पता लगने लगे. Accessibility is a right. Ramps, pathways, accessible facilities are being built across Goa, so persons with disability can move, work, and participate freely in public spaces. Around 850 schools in Goa have been surveyed, primary and secondary schools, for improving the accessibility of those schools. 1600 election booths have been surveyed and detailed reports have been prepared. And around 200 accessible toilets have been constructed in various schools in Goa since 2015. Panjim city right now is fully accessible. Everywhere you can, every corner you can see ramps being fitted. Permanent ramps have been done. We can now walk on the pathways, which makes my life very, I feel independent. Mobility aids bring independence. Through this project, wheelchairs, wheelchair accessible e-rickshaws, tricycles, hearing aids, and other supports are reaching people across Goa. स्कूटर बिल्ला बद्दल म्हाका बरें आसा. एकदम स्कुलान वचोंक जाय, भुरग्याक पावपाक जाल्यार इजी पडटा म्हाका.
आनी बायलेक बी खंय कितें बाजारान वचूंक जाय जाल्यार बी आमकां वचूं येता कोणाक रावपाक गरज ना आतां. The e-rickshaw provided by the Commissioner's office is playing a major role because this especially intellectually disabled children, they face problems for their travel on day-to-day basis. They cannot use regular transport. It is not possible. So this type of facility provided by the Commissioner office is a great boon for our students. Every child has a right to education. Teachers are being trained, parents empowered, and schools sensitized so children with disability can learn alongside others with confidence. म्हाका खबर आहा की म्हाजें लायफ फुडें शिकोनूच बरें घडटलें. सो हांवें बिचोली म्हायतीन कोवपाक घेतला. अशें थोडे चिंततात की एका हातीन कोण कितें टायप करूं शकता, बट हांव हें चिंतिना. हांव म्हाजेर स्वताचेर डिपेंड रावंक सोदता. The UDID card connects persons with disabilities to schemes and opportunities. With added employment generation programs, more individuals are finding jobs and becoming financially independent. In our hotel industry or in resort, there are certain areas where we can give them a job, and I am telling you, they do it far more better than what I do it over here. It's difficult, the joy to express how satisfying and beautiful it was to see this change. It was a dream, I think, many years ago, but this dream is becoming a reality, and thanks to the collaboration between the Commissioner's office, the hotel industry, and the special schools. Apart from these 5 need-based projects, we focus on the holistic growth and well-being of persons with disabilities. Every year, the state hosts Purple Fest and the National Para Swimming Competition, a platform that brings community together and amplifies the message of inclusion. What it gives us is huge impact, from which greatest examples for Goa is the Spinal Cord Injury Center and the Pradhan Mantri Divyang Kendra. We have been creating the full complex of the Entertainment Society of Goa, which is now completely accessible. With Accessible 2035, we are committed to making our state barrier-free, not just in infrastructure, but in mindset too. True inclusion requires attitudinal change, seeing persons with disabilities with a dignity and respect, not sympathy. With the strong support of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, and in line with our Honorable Prime Minister Sri Narendra Ji Modi, his vision of a Vikasit Bharat, we are building a future where no one is left behind. The Commission's journey is about creating that change, and together we will make it happen. After that wonderful video and getting an overview of how Purple Fest was, let me go on to the next speaker. It is said that a leader is one who knows the way, shows the way, and goes the way. And our next individual is one such person who knows the way, shows the way, goes the way. He's been spending sleepless nights. From morning to night, his energy and enthusiasm has rubbed on to the entire team at Goa. We tell him, sir, please go, only then he goes home. Otherwise, he's willing to stay awake and face the wrath of his wife at home. We want to invite on stage the Minister of Empowerment of Persons with Disability, Government of Goa, Shri Subhash Phaldesai, to come on stage. An exemplary leader who leads by example. Please give him a big round of applause, please. Hi, hello everyone. Good evening. The Honorable Chief Guest of this function, Dr. Pramod Sawant, the most dynamic young Chief Minister of Goa. Pramodji,
Dr. Virendra Kumar, the Union Minister for Person with Disabilities, Social Justice and Empowerment of Person with Disabilities. The Minister for State, Dr. Ramdas Athavale, who is an inspiring force behind all these activities. Our own MP in Lok Sabha, Shri Sadanandji Tanawade, Shri Rajesh Agarwalji, the Secretary for the Social Justice, Shombi Shroff, the Resident Commissioner for United States of UNO, United Nations, Sri Premendra Shetji, all the honorable MLAs from Government of Goa, Premen Shetji, Sri Dr. Chandrakant Shetji, Sri Daji Salkarji, Mr. Reginaldo, Alex Reginaldo, हमारे बीच में है. We have amongst us a very own, the State Commissioner for Person with Disability, Mr. Guruprasad Pavaskar, Secretary, Mr. Tahazik, the Director for Empowerment of Person with Disability, Madam Varsha Naik, the Secretary for Person with Disability, Mr. Prasanna Achari, and all the secretaries, joint secretaries, additional secretaries from union government, all the staff and all the officers from government of Goa who have been helping us for successful organization of this big event, all the delegates who have come from all across the world, all the foreign delegates who have arrived here at this juncture, and all those who have come here to make the International Purple Fest a big success. It is a true pleasure to welcome all of you, our national guests, our international delegates, and most importantly, the families, participants, and volunteers who make Purple Fest what it is, a festival like no other. When I think of Purple Fest, I do not see just a festival. I see a moment, a living experiment in inclusion unfolding real time. From the first Purple Fest in 2023 to 2024 and now 2025, I have witnessed something extraordinary. People changing before my eyes. Volunteers, neighbors, school teachers, officers, all of them sensitized simply by being a part of festival, learning that inclusion is not a policy, it is a practice, it is a mindset and shared responsibility, all of us who are here. While Pavaskar was giving the overview earlier, I felt goosebumps. Memories of 2023 and 2024 flooded back in my mind. The first step onto the street of Goa, where Purple Fest came alive. Families watching their children play sports or showcase the talent, the performances, and all the abilities. The joy of seeing public spaces like ESG and even the jetty permanently accessible for everyone. I thought, what are we thinking? But then I realized this is what drives me. The energy, the engagements, and the transformations happening all across the Goa and all across the world. Amche goy, amche bhavart. Our Goa, our pride. Today, our pride is not just our heritage, our beaches, our culture. Our pride is that anyone from anywhere in the world can participate fully in Goa. And I know many of you international delegates are seeing that magic here. For the first time, this is not temporary arrangements, not a show-off for a festival. This is systemic change, permanent accessibility. Purple Fest is also a global conversation. It connects to Vikasit Bharat, to a vision of India
vision of Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi, that inclusive, empowered, and innovative. It is about the universal design, about shaping cities, workplaces, and public spaces so that every human being, irrespective of their ability, can navigate, contribute, and thrive. And this vision is alive here in Goa, from the ESG that hosts hundreds of inclusive sports to jetty and that welcomes all the visitors. We are proving that accessibility is not optional, it is a standard. I must thank our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for being a mentor, a guide, and an inspiration, a motivational force behind all of us. His belief in inclusion and accessibility has made a Purple Fest not just possible, but it is a transformative effort. Over these years, Purple Fest has become more than a festival. It is a movement that transcends boundaries. It has inspired the communities, influenced policies, and most importantly, changed the hearts. When a school teacher in Goa suddenly realizes that a child with disability can teach as much as any other student, or a volunteer discovers that a participation can lead an activity just as brilliantly as anyone else. These are the moments that make a Purple Fest more powerful than ever. These are the moments that ripple outside, shaping society at large. Friends, to our national and international guests, I say what you are witnesses is not just a festival. It is a blueprint or living model for what inclusion can look like anywhere in the world. Goa is showcasing the accessibility, the participation, and dignity can be the heartbeat of the society. Today, I invite all of you to see, experience, and celebrate this magic. Let Purple Fest inspire your communities, your countries, your organizations, and let us all carry energy, the learning, and the commitment of Purple Fest 2025 back home so that inclusion is not just a moment, it is a lifetime practice and lifetime achievements. I thank all the organizers, volunteers, participants, and community for making this vision tangible. Together, we must not just celebrating inclusion, we are building it a step by step for our generations to come. Dhanyavad, thank you, God bless you, and welcome to Purple Fest 2025. Dhanyavad, Jai Hind. Where's the other mic? Where's the other mic? Okay. Thank you, sir, for that enthusiastic transformation. As you said, change is temporary, but transformation is permanent. That's why the transformation, and wonderful said, sir. Next on stage, let me tell you, there's a beautiful Sanskrit saying which goes, Graha pujyate jeshta, gram pujyate panch, desh pujyate raja, vidwan sarvata pujyate, which means that in the home, the elder is respected. In the village, the sarpanch is respected. In the country, the king is respected. But a wise man is respected everywhere. And such a wise man, we are privileged to have him as the Honorable Minister for Social Justice and Empowerment, the Union Government of India. Please welcome on stage Dr. Virendra Kumar, please. इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के शुभारंभ के अवसर पर
कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित गोवा सरकार के हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में हमारे साथ साथी राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, गोवा सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फल देसाई जी, हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित श्री सांबी साहब जी, संयुक्त राष्ट्र भारत के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, हमारे डिसेबिलिटी मंत्रालय के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी, मनमीत कौर नंदा जी, राजीव शर्मा जी, ऋचा शंकर जी, प्रसन्न आचार्य जी और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय नागरिक बंधुओं, हमारी मातृशक्ति और जिनके लिए इन खेलों का आयोजन किया गया है, ऐसे हमारे सभी दिव्यांग खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों, अभी जब कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, कार्यक्रम के प्रारंभ में जितनी अच्छी सुंदर अभिव्यक्ति यहां पर हमारे दिव्यांग बच्चों के द्वारा दी गई, मैं वहां पर बैठा हुआ देख रहा था कि उनमें डेफ बच्चे भी थे, सिंड्रोम बच्चे भी थे, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे भी थे, लेकिन उनका जो अभिव्यक्ति थी, जो प्रस्तुति थी, वो प्रस्तुति सभी के दिलों को छू जाने वाली थी। इतना सुंदर लय, रिदम, ताल के साथ में उन्होंने जो कार्यक्रम का शुभारंभ किया, कार्यक्रम के शुभारंभ से ही जो भगवान की वंदना प्रारंभ करके शुरुआत हुई, वो बता रहा है कि प्रमोद जी के द्वारा 2022 में जो शुरुआत की गई थी, पहले इसको राष्ट्रीय स्तर से प्रारंभ किया गया, बाद में 2 बार से उसको इंटरनेशनल लेवल पर, आज गोवा का पर्पल फेस्ट है, गोवा सरकार के साथ भारत सरकार के सहयोग से इस आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से गोवा सरकार ने इतने बड़े आयोजन को, इतनी बड़ी संख्या में, इतने तरह के खेलों को, भी सुभाष फल देसाई जी बता रहे थे, कितने तरह के खेलों में और इतने सारे बच्चों का पार्टिसिपेट करना, ये सब खेल ही नहीं, ये उनके जीवन में उनके ऊर्जा को, उनके उत्साह के उमंग को, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। और मुझे यहाँ पर इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में आने पर जो प्रसन्नता और खुशी का एहसास हो रहा है, ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश देने वाला आयोजन है। पूरे विश्व के लिए समावेशन, सशक्तिकरण और प्रेरणादायी संदेश लेकर ये इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो यहाँ पर 30वीं साल यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, मैं इस अवसर पर इस बात को विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट से प्रेरणा लेकर देश के कुछ अन्य राज्यों ने भी और वहाँ पर पर्पल फेस्ट को शुरुआत करने का शुभारंभ किया है। इस तरह के आयोजनों से पूरे देश में समावेशन और सुगमता की भावना को मजबूत किया जा रहा है। हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए इस तरह के आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिभा के बल पर अपना स्थान बनाने के लिए एक स्वर्णिम अवसर के समान होते हैं। पर्पल फेस्ट का उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुरूप समान अवसर, सम्मान मिले और हमारे खिलाड़ी जिन्होंने अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में छोटे छोटे स्थानों पर खेल खेलते थे, लेकिन उनको जब अपने गांव से, अपने शहर से, अपनी राज्य की सीमाओं से आगे बढ़कर इस तरह के इंटरनेशनल फेस्टिवल में, पर्पल फेस्ट में आने का जब अवसर मिलता है, उनको लगता है हम छोटे तालाब से निकलकर हमको समुद्र में तैरने का अवसर मिला, हमको समुद्र में तैरने का, जीवन में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला। और इस समावेशी सोच को ही हमारी नीतियों, सामाजिक संरचनाओं को मूल बनाते हुए यूनिवर्सल डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है जिसमें सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को
उनकी प्रतिभा के अनुरूप खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिले। अभी ग्वालियर में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दिव्यांगजनों के लिए समर्पित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल केंद्र स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया गया है। लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से वह खेल स्टेडियम बनाया गया है, जहां दिव्यांगजनों के उनकी सारी संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के कोर्ट के निर्माण कार्य कराए गए। वहां पर हॉस्टल भी बनाया गया है, जहां पर आज बड़ी संख्या में दिव्यांग खिलाड़ी अलग अलग संगठनों के माध्यम से साल भर वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। और इस तरह के प्रैक्टिस करने के काम से जब वो आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि अभी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो अभी पैरा ओलंपिक 2025 का विश्व पैरालंपिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। और भारत ने इस विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने का काम भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों ने किया। उसमें 9 रजत पदक जीतने का काम हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी किया और 7 कांस्य पदक जीतने का काम हिंदुस्तान के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने किया। इस तरह के इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के आयोजन ऐसे खिलाड़ियों को जीवन में आगे बढ़कर और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। 73 सदस्यीय दल था और 73 सदस्यीय दल में से 22 स्वर्ण पदक जीते। इसके पहले जब 2016 में जो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, उसमें हमारे देश के 19 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे। 4 पैरा ओलंपिक हमारे खिलाड़ी जीत के आए थे। फिर 2020 में टोक्यो में जब पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ तो उसमें हमारे 54 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी, और वो 19 मेडल जीत के आए थे। इसके बाद पेरिस 2024 में हमारे देश के 84 दिव्यांग खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए गए और वहां पर 29 मेडल जीत करके एक कीर्तिमान बनाने का काम हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के द्वारा किया गया। अभी हम मुंबई की एक बेटी का उल्लेख करना चाहते हैं। हमारे मुंबई की बेटी है जिया राय, 17 साल की बेटी है और वो ऑटिज्म से ग्रसित होने के बावजूद भी उस 17 साल की बेटी ने इंग्लिश चैनल और कैटानीली चैनल को पार करके, अरब सागर पार करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया और इंग्लिश चैनल को मात्र 17 घंटे और 35 मिनट में पार करके सबसे कम उम्र की इंग्लिश चैनल को पार करने वाली बेटी इस भारत की धरती से निकलकर पूरी दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित किया। हमारे यहाँ के एक दूसरे खिलाड़ी हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने इंग्लिश चैनल को हाल ही में पार करके और हाल ही में बॉम्बे का 33 किलोमीटर सर्किट केवल 5 घंटे और 42 मिनट में पूरा किया। उन्हें पद्मश्री और तेंजिंग नार्गे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये तीनों ही खिलाड़ियों की जो विजय प्राप्त हुई है, ये उनकी अडिग इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो कहती है हार केवल तब होती है जब मन हार जाता है। मन में अगर विश्वास होता है, संकल्प अगर दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल होती है, तो पहाड़ की चोटियों को भी पार करना आसान हो जाता है और समुद्र की गहराइयों को नापते हुए तैरकर उस पार जाना भी आसान हो जाता है। मैं प्रमोद सावंत जी का, इनका मैं हृदय की गहराइयों से इनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जिस इच्छा शक्ति के साथ में यहां पर इसको प्रारंभ किया। अब हमारा इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट खेल के साथ साथ खिलाड़ियों को उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को आगे बढ़ाने का भी अवसर प्रदान करता है। उसका हमने उदाहरण यहां पर देखा। हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में हमने क्या देखा कि हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा जो दिव्य कला मेला लगाया जाता है, वहां पर बहुत सारे दिव्यांगों ने स्टॉल लगाए हैं। उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को विक्रय करने के लिए प्लेटफॉर्म भी यहां पर उपलब्ध कराया गया है। हमारे दिव्यांग अलग गांव में कुछ सामान बनाते हैं, कोई नगर में बनाता है, कोई शहर में बनाता है, लेकिन उसको विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। इस तरह के इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के आयोजन में ऐसे दिव्यांगजनों को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए जो भारत सरकार के द्वारा दिव्य कला मेलों की शुरुआत हुई है, अभी तक 25 दिव्य कला मेले सारे देश में लगाए गए। यहां पर पुनः दिव्य कला मेले का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से दिव्यांगजन अपने द्वारा निर्मित सामग्री को विक्रय करने के लिए आए हैं। हमें यहां पर आए हुए खिलाड़ियों का उनके खेलों के लिए उत्साहवर्धन तो करना ही है, खिलाड़ियों के साथ साथ
उनके जो कोच हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो शिक्षक हैं, उनके जो परिजन हैं, उनका भी हौसला अफजाई इस तरह के इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के आयोजन से होता है। उनको लगता है कि हमारा बच्चा अगर डिसेबल्ड है, हमारा बच्चा अगर डाउन सिंड्रोम है, अगर हमारा बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, हमारा बच्चा डेफ है, लेकिन उस बच्चे को जब इस तरह के अवसर मिलते हैं तो पेरेंट्स को क्या लगता है, समाज हमारे साथ खड़ा है, गोवा सरकार उनके साथ में खड़ी है, भारत सरकार उनके साथ में खड़ी है। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर यह आयोजन किया गया है, जहां हर व्यक्ति स्वावलंबी जीवन जी सके और समाज में अपनी योग्यता के अनुरूप सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जो देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जब बात आती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, जब सभी के सामूहिक प्रयासों की बात आती है तो उसमें हमारे दिव्यांगजन भी पीछे ना रहें। दिव्यांगजनों को भी उनकी प्रतिभा के अनुरूप साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, ताकि सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना। उस भावना के अनुरूप देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न भी साकार करना है। वो स्वप्न समाज के लिए साकार करना है, वो स्वप्न राष्ट्र के लिए साकार करना है। और राष्ट्र में कोई भी एक व्यक्ति भी कोई पीछे न रहने पाए। समाज के ऐसे जितने नीडी पर्सन हैं, और नीडी पर्सन के लिए शिक्षा, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक इन सारी गतिविधियों को बढ़ाते हुए हम सब जिस गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा कानपुर में जो एलिम्को का कारखाना है, अब ये एलिम्को का कारखाना जहां पर दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण बनाने का काम किया जाता है, आज से लगभग 11 साल पहले ये बंद होने की कगार पर आ गया था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष जब इस विषय को लाया गया तो उन्होंने कहा नहीं, इसको रेनोवेट करना है, और 338 करोड़ रुपए की लागत से एलिम्को के कारखाने को पूरी तरह से उसका कायाकल्प किया गया। आज हमारे एलिम्को कारखाने कानपुर में बनने वाले जो दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण हैं, वो सहायक उपकरण विश्व स्तर की श्रेणी की उसको ऊर्जा को प्राप्त करने जा रहे हैं। वहां पर जो तरह तरह की सामग्री निर्मित होती है, पहले केवल ब्राउन कलर और काला कलर, केवल 2 कलर के सामान बनाए जाते थे, गुणवत्ता में भी लगातार उसमें गिरावट आ रही थी। लेकिन आज जब एलिम्को के कारखाने का जीर्णोद्धार किया गया, उसका नवीनीकरण किया गया, तो आज कानपुर के एलिम्को के कारखाने में बनने वाली सामग्री विश्व स्तरीय भी बन रही है। और हमारे दिव्यांगजन उस सामग्री को प्राप्त करके जब अपनी दैनंदिन गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं तो उनके अंदर एक ऊर्जा का, आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है। और आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए, वहां पर आपको एलिम्को के द्वारा जो ट्राई बैटरी गाड़ी हमारे दिव्यांगजनों को 80% की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दी जाती है, कोई बेकरी का सामान लेकर बेचते हुए जाता हुआ मिल जाएगा, कोई रेडीमेड कपड़ों की बोटरी लेकर गांव के हाट बाजार में बेचने के लिए जाता हुआ मिल जाएगा, कोई प्लास्टिक की सामग्री लेकर बेचने जाने के लिए मिल जाएगा, तरह तरह की सामग्री का उपयोग करने के बेचने के लिए जाता हुआ मिल जाएगा। भाई हमारे बहुत से दिव्यांगजन जो कोचिंग का काम करते थे, घर पर रहकर बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते थे, आज ये बैटरी वाली गाड़ी जब उनको मिली तो वो आज 4-5 घरों में जाकर और बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। इससे उन दिव्यांगजनों का परिवार में तो सम्मान का भाव बढ़ा ही, समाज में भी दिव्यांगजनों को सम्मान की दृष्टि से देखने का भाव बढ़ा है। और आज जब दिव्यांग जब बाजार से लौटता है, सामान बेचकर घर आता है, तो परिवार के परिजन कहते हैं तुम गाड़ी छोड़ दो, बैठकर मुंह हाथ धो, चाय पियो, नाश्ता करो, हम गाड़ी हम रख देंगे, सामान हम रख देंगे। इसी तरह के सोच को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट आज 30वें वर्ष में आज जो जा रहा है, मैं ऐसे सफल आयोजन के लिए प्रमोद सावंत जी को, राज्य सरकार के सभी हमारे सुभाष फल देसाई जी को, उनके आयुक्त महोदय जी को और उन सभी संगठनों को, जिन संगठनों ने इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में अपना सहयोग किया है, उन सभी के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद करता हुआ इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि जिंदगी की हर कमी जो भूल जाता है, जिंदगी की हर कमी जो भूल जाता है, हौसला रखता सदा ही मुस्कुराता है। क्या हुआ है वह आंख से जो देख नहीं पाता है, दिव्य दृष्टि से नजर सबूत को आता है। क्या हुआ जो हाथ से लिख नहीं पाता है, क्या हुआ जो पैरों से चल नहीं पाता है, दौड़ जीवन की मगर वह जीत जाता है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जैसे आयोजनों से अपने लक्ष्य को, मंजिल को पा जाता है। बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्दों के प्रवाह ने हम सबको भिगो दिया है और हमको पहले आपने जिस उत्साह से बोलना शुरू किया, आप मुझे तो लगा आप हमें डांट रहे हैं, पर फिर लगा कि आप हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। मुझे आपका प्रेरणा का स्रोत हैं और आपकी नेतृत्व में ये मंच सुशोभित हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वंडरफुल and very, very inspiring talk. Please give him a big round of applause. I would like to also call upon stage the Secretary in the Ministry of Persons with Disability, Shri Rajesh Agarwal, Mrs. Archana from Shri Vakil Foundation, Shri Guru Prasad Pavaskar sir, and Shri Subhash Faldesai sir to release a book by NIPMED. I would also like to call all the representatives from NIPMED. NIPMED is the National Institute of Promotion of Empowerment of People with Multiple Disabilities. And we are going to release a book, as our Honorable Minister said, that nobody should be left behind. So please give them a big round of applause. A very good evening to all of you. Just one correction. It is NIPID, National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disability. निपिड दिशा करिकुलम जिसको कि दिशा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जय वकील फाउंडेशन मुंबई द्वारा 2019 में तैयार किया गया और जिसे राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा अप्रूव किया गया। इसको महाराष्ट्र राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया और इसकी सफलता को देखते हुए इसके देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए संस्थान के निदेशक डॉक्टर BV राम कुमार सर की उपस्थिति में श्री राजेश अग्रवाल सर, सचिव, माननीय सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में 18 जुलाई 2025 को MOU साइन किया गया और इसके माध्यम से ये पाठ्यक्रम अभी पूरे देश में लागू होगा। हम बहुत आभारी हैं गोवा के माननीय आयुक्त श्री गुरुप्रसाद पावस्कर सर का कि उन्होंने इसको गोवा राज्य में लागू करने के लिए अग्रिम सहमति दी और इसको लागू करने के लिए सभी विशेष शिक्षकों का यहाँ पे प्रशिक्षण किया गया। यह पाठ्यक्रम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है जहाँ आकलन किया जा सकता है और उसके अलावा आकलन के बाद बच्चों को पुस्तकें दी जा रही हैं और एक यूनिफॉर्म पाठ्यक्रम प्रदान किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो ऑनरेबल मिनिस्टर और एक आपको काम करना होगा। डॉक्टर उत्तम ओझा ने नरेंद्र जी मोदी हमारे आदरणीय पंतप्रधान ने जिस 10 सालों में जो भी दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, पॉलिसीज, लेजिस्लेशंस की है उसकी पूरी एक किताब डॉक्टर उत्तम ओझा ने यहाँ पे प्रस्तापित की है और उसका विमोचन करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। Thank you, sir, for that book release. Yeah, please give them a big round of applause. It is not what you have that matters, it is what you do with what you have that matters. There are 7 colors, but what did Picasso, Raja Ravi Verma and M.F. Hussain do with those 7 colors? They created magic. There are only 7 notes in music, but what did Lata Mangeshkar ji what you have is so important. And to keep this tradition of music alive, we have a wonderful performer, Srimati Mayuri Atre, who will come on stage and delight us with those 7 beautiful notes. An amazing singer. Please give Mayuri Atre a
Good evening. Good evening. Namaste to everyone. All the dignitaries present. My namaste to everyone. The audience, all the members, my community. I first of all thank the Purple Fest for inviting me here. मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपनी गायन कला मतलब प्रेजेंट कर पा रही हूँ. कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले we always remember Ganpati Bappa in our minds, Lord Ganesha. So I'll start with a short slok of Ganpati Bappa. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru me Deva Sarvakareshu Sarvada. धन्यवाद. इसके बाद मैं कुछ गीत आप सबके लिए प्रस्तुत करने वाली हूँ. मेरा पहला गीत है Zooby Dooby from the film 3 Idiots. May I get the track please? Zooby dooby zooby dooby pam pam, zooby dooby param pam, zooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man. Zooby dooby pam pam, zooby param pam, zooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man. ईशा को भी पत्ते गा रहे हैं, फूलों में भंवरे गा रहे, दीवाने किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे. वो बगियों में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है खूब खूब. आई 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 zooby dooby pam pam, zooby dooby param pam, zooby dooby नाचे
My next song is Udi from the film Guzarish, wonderfully sung by Sunidhi Chauhan. थोड़ा सा रिवर्ब प्लीज कम कर कीजिएगा थोड़ा सा, एंड मॉनिटर्स में माई वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा. सो थैंक यू. सो मैंने टाइम स्लॉट के हिसाब से आई ट्राइड टू चूज सच सॉन्ग्स जिनमें से हमें सातों रंग दिख जाते हैं. सो पहले वाला जूबी डूबी था जो काफ़ी रोमांटिक सा गाना था. उसके बाद उड़ी जो थोड़ा सा वेस्टर्न सा उसको टच था. इसके बाद मैं एक गाना गाने वाली हूँ जो थोड़ा ओल्ड है लेकिन बहुत क्लासिक है. ओके सर. सो ये अगला जो गाना है ये पुराना गाना है, सबको मज़ा आएगा जिन्हें भी. मेरा नाम चिन चिन चू. चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू. रात चांदनी में तो हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू. मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन
जाए ना पागल तू, मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में ओ तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में ओ तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, बाबा बाबा बाबा। ओ बाबूजी मैं और आप कितना अच्छा हुआ मिला, तुझको देख तबीयत भड़की, अल्लाह दिन की मैं हूँ लड़की। ओ बाबूजी मैं और आप कितना अच्छा हुआ मिला, तुझको देख तबीयत भड़की, अम्ला दिन की मैं हूँ लड़की। फूक दे मंतर छू छू छू, सिंदबाद दा सेलर तू, फूक दे मंतर छू छू छू, सिंदबाद दा सेलर तू, मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में ओ तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में ओ तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, बाबा 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 बाबा। अब जो गाना है बहुत ही खास है, एकदम क्लासिक है। इट्स फ्रॉम द फिल्म मेरे ढोलना, इट्स फ्रॉम द फिल्म भूल भुलैया। द सॉन्ग इज मेरे ढोलना। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके बना, तन तुम
धनि सा ग म मग सनि धनि सा ग मग सनि धनि सा ग म ग म ग सनि ध म ग म धनि सनि ध म ग म धनि सा नि ध नि धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा मदनि 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 धनि सा धनि सा धनि सा मदनि 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 सा मदनि सा मदनि सा मदनि सा सनि ध म सनि ध म सनि ध म सनि ध म सा सा नि नि सा सा नि नि ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध म म ग ग सा सा नि नि ध धनि सा 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 नि ध सा 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 मद सा 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 मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना सांसों में तेरे सरगमे है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन सांसों में तेरी सरगमे है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरे धड़कनों में बजती है मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है ओ पिया नि सा नि सा नि सा धनि 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 पद 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 ग म पद नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा धनि 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 पद 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 ग म पद नि सा पनि नि सा पनि नि सा पनि नि सा पनि पनि नि सा पनि नि सा पनि नि सा पनि ग म पद नि ध पद नि ध पद नि सा ग म पद नि ध पद नि ध पद नि सा ग म पद नि ध पद प म ग म ग रे सा नि धनि सा ग म ग सा ग म पद पद नि ग म पद नि ध पद प म ग म ग रे सा नि धनि सा ग म ग सा ग म पद पद नि नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा धनि 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 ग म पद नि ध प म ग म पद नि ध प म ग म प म ग म ग रे सा रे सा नि धनि सा ध धनि नि सा सा ग ग म सा सा ग ग म म ध धनि धनि सा ग सा नि धनि सा नि धनि ध प म ग म ध नि सा धनि ध म ग म ग रे सा नि धनि सा ग म ध नि सा नि ध प म ग म ग सा ग म ध नि सा नि ध प म ग म ग रे सा नि ध धनि नि सा सा ग ग नि नि सा सा ग ग म म सा सा ग ग म म ध ध ग ग म म ध धनि म म ध धनि नि सा सा ध धनि नि सा सा ग मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया सबका एक लास्ट अनाउंसमेंट बस करना चाहूँगी मैं पुणे से हूँ पुणे महाराष्ट्र किसी को कोलैबोरेशंस करने हो तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है मयूरी अत्रे MAYURIATRE आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं एंड कहीं अगर डिसेबिलिटी या डिफरेंटली एबल्ड कुछ टॉपिक के बारे में भी अगर अवेयरनेस या अगर मेरी तरफ से कुछ भी एंटरटेनमेंट मैं प्रोवाइड कर सकूं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी शुक्रिया एक मिनट ठहरिए माइक नहीं है क्या गिव मी द माइक थैंक यू सो मच मयूरी जी आपको सुन के मेरे को लगता है आपके पेरेंट्स को आपका नाम सुर मयूरी रखना था चाहिए था मयूरी आप जिस तरह से सुरों के साथ नाच रही थी मुझे तो अचंभा हो गया और जब आप गा रही थी मेरा नाम चिंचिचू बाबा हम लोग बोल रहे थे वाह 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 मेरा नाम मयूरी वाह वाह और
There is international sign language and the Indian sign language. वो भी नाच रहे थे आपको सुन के. तो इनोवेटिव साइन लैंग्वेज हो रहा था. तो मयूरी जी आप देख नहीं पाई, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, पर मुझे बताया जा रहा कि आप वो भी नाच रहे थे आपके गानों में. तो my favorite singer was Shreya Ghoshal before this, but now it's Mayuri Atre. Please give her a big round of applause. You sang Dolna even better than Shreya Ghoshal. Fantastic, absolutely. मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए. Absolutely brilliant. We would like to call upon stage a great friend of mine, an amazing person, the secretary from the Office of the Commissioner of Persons with Disability, Goa. He's also Wawa Taha. Please call on stage to give the memento to Mayuri Atreji. Okay, it's already given. That's what I heard. Okay, Taha, thank you so much for giving that memento. Next, we have on stage a person who is a leader in the disability sector, Shri Rajesh Agarwal ji. Before you become a leader, it's all about growing yourself. But after you become a leader, it's all about growing others. And that's what Shri Rajesh Agarwal ji has done in the being an IAS officer and the secretary in the Ministry of Persons with Disability. So please welcome him to share a few words with us. Shri Rajesh Agarwal ji, thank you so much. Good evening. Goa is known for its hospitality, but since 3 years, the Divyang community across the country also now considers Goa as their second home because they are welcome here. They can meet the entire community from the country. They can meet the best of startups. They can meet parent groups. They can go to the beach. They can go to any bazaar, any restaurant, and it's accessible. And the whole credit of it goes to Chief Minister Sawant Sahab, Minister Subhash Pardesai ji, your entire political leadership, sir. A lot of MPs, MLAs are involved in this effort. And your whole bureaucracy led by Guru Prasad, Taha, Varsha, Prasanna, etc. Our Government of India team led by our captain Virender Kumar ji, 2 vice captains, Ramdas Athwale ji and BL Verma ji, and all the players. We are solidly behind you. And so just one example, 3 years back, I saw first Neo Motion and first Zomato delivery boy here. And in 3 years, the network impact has been so much that today we have 15,000 plus delivery boys and girls from Zomato, Swiggy, Amazon, Flipkart, etc. And sir, I am not exaggerating if I say that these 3 years have created such an impact amongst the corporate sector also that they are contributing at least 500 crore rupees per annum extra to this cause. So we hope, and today we have colleagues from many other states, we hope it drops on them and they do also mini Purple Fests and they also start welcoming the Divyang community in the same way. So thank you so much and best wishes to everyone. Thank you. I would like to invite the Secretary in the Office of the Commissioner of Persons with Disability, Shri Taha Zik, to give the memento to Shri Rajesh Agarwal ji. Please give him a big round of applause. I'm going to call the next person on stage. I've heard him in Parliament and I'm very, very amazed by the rhymes and poems and jumle जो वो बोलते हैं. तो मैंने भी एक जुमला तैयार किया है.
आपकी बातें हैं बहुत निराली, आप संसद के हैं हिम्मत वाले, और आप इस पर्पल फेस्ट में आके हम लोगों को बना देंगे मतवाले. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज श्री रामदास अठवाले, the Minister of State for Social Justice and Empowerment. If you have heard him in Parliament, you will be amazed by the poetry which he recites. So please welcome on stage Sri Ramdas Athwale, the Minister of State for Social Justice and Empowerment. Thank you. Honorable Chief Minister of Goa and my good friend Dr. Pramod Sawantji, my ministry's Cabinet Minister Dr. Virendra Kumarji, and who is main organizer of this function, Dr. Subhash Paldesai ji, Sadanand Tanode ji, Rajya Sabha member of BJP, Sri Sombi Shah, UN resident, coordinator, United Nations in India, Rajesh Agarwal, who is the Secretary of Department of Persons with Disabilities, Government of India, and another many friends are present here. I am also very happy to attend this very important function. Goa is a beautiful state, and therefore this function, International Purple Face. Goa state is based, and this is International Purple Face. All of you are also present here, and all our disability community. They are not disabled, because you have seen the singer of this lady from Maharashtra, from Pune. Her sound was very nice sound, as like as Lata Mangeshkar. She is very nice singer. You have seen the dance of all disabled children, but in their dance they are not disabled. They are having good ability. In games they are also very active. In dance they are very active. And one person for Goa, he is a law student. Not law student, he became the advocate now. There are many clever people in disabled community. और मैं बताना चाहता हूं कि जब बजती है बेल तब उनका बंद होता है खेल. जब बजती है बेल तब उनका बंद होता है खेल, लेकिन जब बजती है बेल तब तुम्हारा शुरू होता है खेल. तो यू आर ऑल्सो वेरी एक्टिव पर्सन. आप बहुत ही एक्टिव सभी क्षेत्र में हैं. And our Prime Minister Narendra Modi ji is a very active Prime Minister of India, very popular Prime Minister of India. He wants the development of the country. He wants the development of every person. And he is also supporting the Divyangjan community, disabled community. Sugamya Bharat Yojana he started. And when Narendra Modi ji became the Prime Minister of India, he decided that this community is not disabled.
He is able community. And therefore he has given the name Divya Ang. जिनका होता है अंग दिव्य उन्हें हम बोलते दिव्यांगजन. Therefore Narendra Modi is also giving the more budget to disabled community. My ministry is also supporting all disabled community. And you know that our ministry is having two secretaries. Mr. Agarwal Saab is the secretary of disabled community, and another Yadav is the another secretary of our ministry. And therefore I am not going to take your more time, because you want to see the another cultural program. You want to listen the speech of our Honorable Chief Minister Pramod Sawant. He is the two-time Chief Minister of Goa. Two times. And I am the third time Minister in Narendra Modi's government. You will be third time Chief Minister of Goa. Because Narendra Modi's leadership is also developing leadership. Narendra Modi is also the popular leader in all over the world. And I am the minister in Narendra Modi's government. My party's name is Republican Party of India. I am from Maharashtra. I am staying in Mumbai and Delhi. And Dr. B.R. Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar, started the Republican Party of India. Baba Saheb Ambedkar is also the architect of Indian Constitution. And Dr. Baba Saheb Ambedkar's community like a disabled community, a Dalit community. But Dr. Baba Saheb Ambedkar said to them, you are very strong. You should become very strong in the future. And Baba Saheb Ambedkar has given the constitution to India to support to all, every country. In our country, everybody is also the citizen of India, and he who is the citizen of India, our constitution is also supporting them. And therefore, I am not going to take your more time. जो ये फेस्टिवल चल रहा है, ये फेस्टिवल पर्पल फेस्ट. Goa is based, therefore purple face. If you want to rest, come and see this face. And therefore, all of you are also present here. International community is also present here. Many other countries, disabled are also present here. And from all over India, many students, many children, many disabled communities, persons are also present here. Thank you very much. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Goa, Jai Purple Festival. We would like to ask Shri Prasanna Acharya ji to hand over the memento to our Honorable Minister Shri Ramdas Athwale ji. Okay. Next, we have somebody from the United Nations, UN. Talking about the UN, I'm reminded of an incident which my grandfather used to tell me. He had a friend called Mazhar Uncle who used to be in the United Nations, and they had a conference, and in that conference, they had invited all the delegates from all over the world, and they were seated in alphabetical order. And the US ambassador
who was the most powerful person in the room with his suit and coat, was seated next to the Ugandan ambassador, who was in a small shirt and he was very, very demeaning and he wasn't very confident. US ambassador said, I don't want to sit near this Ugandan ambassador, but they said there's a protocol, so you have to sit. The US ambassador sat next to the Ugandan ambassador and he looked at him when the first meal was being served, the soup was being served, and in a very condescending manner, he thought, oh, this Ugandan ambassador can't speak English. He looked at him and he said, likey soupy? The Ugandan ambassador nodded his head and said, okay. Afterwards, after the dinner was over, the Ugandan ambassador was called on stage and he spoke beautifully for nearly 20 minutes in Queen's English. And everybody was stunned. They gave him a standing ovation. And when he came back and he sat next to the US ambassador, he looked at the US ambassador and said, likey speechy? And I just want to tell you that never ever think a person is below what you estimate him to be. Pride goes before a fall. And a person who is very humble and a person who's a leader and the UN coordinator representative in India, please welcome Mr. Shombi Sharp to give his address. So you can use this mic. Thank you. Thank you so much. It's an absolute pleasure. It's an honor. Yeah. Thank you so much. Dr. Pramod Savan, Honorable Chief Minister of Goa. Dr. Virendra Kumar, Honorable Union Minister of Social Justice and Empowerment, Government of India. Dr. Ramdas Atwale, Honorable Minister of State for Social Justice and Empowerment. Sri Sadanand Tanavade, Member of the Rajya Sabha. Sri Rajesh Agarwal, Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment. Sri Subhash Pal Desai, Honorable Minister for Empowerment of Persons with Disability, Government of Goa. Sri Prasanna Acharya, Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disability, Government of Goa. Sri Guru Prasad Pavaskar, State Commissioner for Persons with Disability, Government of Goa. Ms. Varsha Naik, Director, Department of Empowerment, Persons with Disabilities, Government of Goa. And Sri Taha Hazik, Secretary, Office of the State Commissioner for Persons with Disability, Government of Goa. It is a great honor and pleasure to be here. UN Parivar की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार. मुझे गोवा में और इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में आकर बहुत बहुत खुशी हुई. It is a great honor to be here with representatives of across all the states and union territories of India, of all the departments of Goa, civil society, organizations of persons with disabilities and representatives from so many different countries. It's an absolute thrill to be standing here in Goa this evening, surrounded by color, by laughter, by talent, by joy. This is something I have been looking forward to doing for years. So I'm so happy to finally be here and to see such fabulous talent here tonight. The dancers, the singers, truly incredible. Dear friends, as we know, unfortunately, the world is off track. The Sustainable Development Goals, 2/3 of those goals have fallen behind. And persons with disabilities face additional challenges, whether it is poverty, whether it is barriers to access for health, education, livelihoods, and more. This is a year of milestones. It is the 80th anniversary of the founding of the United Nations. The very concept of coming together, communities and countries coming together for collective solutions to common challenges. And yet we face these challenges and these barriers. But there are some very important reasons for optimism. And here tonight, I would like to speak about 3 of those powerful reasons, sources for optimism.
First is the International Purple Fest. I would like to especially thank the government and the people of Goa and the government and the people of India for making this precious gift possible for all of us. Thank you so very, very much. Secondly, great source of optimism comes from India, from Bharat, because India's commitment to disability inclusion is among the most progressive in the world. Through the Rights of Persons with Disabilities Act, India's laws and legal framework are strongly aligned with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And behind these frameworks and these laws are the lives and aspirations of millions of Indians whose experiences remind us that inclusion is not a gift bestowed, it is justice owed and justice being fulfilled. And let us not forget that India has the greatest youth generation in history. No country has had more young minds to tap for solutions ever before than here in India. And we are therefore so proud to partner, the United Nations, to partner with Goa, with the government of India on universal design, and to partner in so many other ways across this incredible, diverse country. Whether it is bringing inclusive data to policy, healthcare, education, disaster preparedness, employment opportunities, or culture, and much, much more. Just last week, I came from Calcutta, where the UN has had the privilege to partner with governments and with organizations of persons with disabilities to make the great Durga Puja disability inclusive. Absolutely fantastic. And now here in Goa. None of this would be possible without the strong leadership of the Government of India, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, and the incredible civil society partners and organizations of persons with disabilities like Rising Flame, like Youth for Jobs, ASTA, Politics and Disability Forum, CHEB, and so many others. Finally, third source of optimism is the international spirit here tonight. The Global South rising and beyond. The United Nations is not just, or maybe it really isn't, New York and Geneva. The United Nations is here right now. The United Nations is you. As Goa turns purple this week, let it also shine as a beacon of what the world can be. Inclusive, vibrant, joyful, human. And with India as a leader on the global stage, a voice for the Global South, uniquely positioned to bring people across divides, east-west, north-south, as India turns purple and inclusive, the world will follow. So to conclude, आज हम गोवा को और भारत को और आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं. We thank you, we thank Goa, we thank India, and we thank every single one of you here today, especially persons with disabilities, for making this festival possible and making a bright future possible. Sathe to sambhav hai. Together we can achieve our dreams. Bahut bahut dhanyavad. Thank you, sir, for that brilliant and telling all about India. And I remember when the first Indian went on to space, Squadron Leader Rakesh Sharma, and when the then Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, had asked Rakesh Sharma
how does India look from top? And he said, बिना देखे मैं बोल सकता हूँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. And I think so that's what you said. And please give him a big round of applause. There was a teacher who once went to class and there was a boy sitting in the front bench and he asked the boy, if God gave you a wish, what would you ask God for? So the boy smiled and said, sir, I will definitely ask for a brand new iPhone Pro Max 16. I'll definitely ask for a brand new laptop. I'll definitely ask for a 350cc bike. The teacher got a little irritated and she said, what's wrong with you? If God appeared in front of you, you should be asking for wisdom. You should be asking for courage. You should be asking for talent. The boy smiled at the teacher and said, sir, you ask what you don't have, I'll ask what I don't have. And this is what our next speaker is, a very talented boy, a young boy who can put teachers to shame, an individual who can speak from his heart, from his head, a very, very talented young person with visual impairment, Prathamesh Sinha. I met him around 2 years back and I was so taken up by him that I have to learn speaking skills from him. So please welcome on stage Prathamesh Sinha. Yeah, thank you so much for the introduction. धूमल सी शाम और धूमल सी छटा, धूमल से दिलों में अरमान और धूमल से बंधा समा, आज समावेशिता, समानता और सम्मान से भरे इस अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट में मैं प्रथमेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, माननीय सामाजिक कल्याण मंत्री श्री सुभाष देसाई जी, माननीय सेक्रेटरी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय श्री राजेश अग्रवाल सर और मंच पर आसीन यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। पर्पल फेस्ट ये शब्द एक आम इंसान के लिए सिर्फ एक शब्द हो सकता है, सिर्फ एक आयोजन हो सकता है, परंतु दिव्यांगजनों के लिए और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए ये सर्वाधिक प्रतीक्षित क्षण है, क्योंकि ये उत्सव है समावेशिता का, ये उत्सव है जागरूकता का, ये उत्सव है स्वीकृति का और ये उत्सव है सम्मान के साथ सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का। ये हर एक दिव्यांगजन के गौरव से जीवन जीने और गरिमापूर्ण जीवन के संचालन करने के प्रयासों का हिस्सा है। ये एक ऐसा आयोजन है जो आपको कला के प्रदर्शन के लिए मंच देता है। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको क्रय विक्रय का बाजार देता है, अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको खेल का मैदान देता है और अगर आप में क्षमता है तो आपका पूरा साथ देता है। मैं इस मंच से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके स्वप्न पूर्ति के फलस्वरूप आज दिव्यांगजन एक समावेशित और आत्मसम्मान से भरा जीवन जी रहे हैं। सरकार की बहुआयामी योजनाओं और समर्थन की वजह से इस प्रकार के मंच प्रभावी रूप से काम कर पाते हैं। दिव्यांगजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी हमेशा सक्रिय और मदद के लिए तैयार रहते हैं और इस मंच से मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री राजेश अग्रवाल सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी विस्तृत सोच का ये नतीजा है कि आज दिव्यांगजन टेक्नोलॉजी से परिचित हो रहे हैं और टेक सेवी बन रहे हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सर और मंत्रालय का विजन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये भी है कि हाउ टू एम्पावर स्पेशली एबल्ड पीपल विथ AI एज वेल, जिसमें पूरा मंत्रालय एलएमको और सभी लोग इस विजन की ओर काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय तो AI का ही है, तो हम पीछे क्यों रहें। राजेश अग्रवाल सर, आपके समक्ष मैं एक प्रस्ताव रखना चाहूँगा इस मंच से कि क्यों ना ब्रेल और साइन लैंग्वेज को
मुख्य शैक्षणिक करिकुलम में सम्मिलित करवाने का कृपया प्रयास करें। ये आपके द्वारा समावेशिता की ओर किए गए कई प्रयासों में से एक और सराहनीय कदम होगा। आखिर हम दिव्यांगजनों को रहना इसी समाज में है। हम नॉर्मल तौर तरीके सीख जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांगजनों को भी पता होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने कैसे डील की जाए दिव्यांगजनों के साथ। ये नॉर्मल पर्सन को भी पता होना चाहिए कि कैसे ज़रूरत पड़ने पर डील की जाए, कैसे साइन लैंग्वेज समझी जाए, आपातकालीन सिचुएशन में कैसे किसी दिव्यांगजन के साथ डील की जाए। और अगर हम स्कूल्स में फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए इतने प्रयासरत रहते हैं तो ब्रेल और साइन लैंग्वेज क्यों नहीं? आखिर ये तो मानवता की भाषा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे एडिप, CDIC, स्कॉलरशिप और फेलोशिप, जिनकी वजह से ना सिर्फ दिव्यांगजन पढ़ाई कर पा रहे हैं बल्कि अपना व्यवसाय भी शुरू कर रहे हैं और इस देश की आर्थिक उन्नति और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक के विकसित भारत के विजन में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़रूरत है बस अपने अंदर के टैलेंट को जगाने की, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म सरकार दे रही है। मैं इस मंच से गोवा सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने UN इंडिया के साथ मिलकर इस पर्पल फेस्ट की शुरुआत की, जो पिछले 2 सालों में समावेशिता का एक उत्सव बन चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। और मैं कल यहाँ आया था, कल मैं गोवा पहुँचा, मैं यहाँ पे देख रहा था कि माननीय मंत्री जी जो हैं सुभाष देसाई सर, वो कल से बहुत मेहनत करें, वो हम पर्पल फेस्ट के लिए बहुत मेहनत करें, पूरी सरकार ने यहाँ पे बहुत मेहनत की है और आज ये पर्पल फेस्ट और ये मेहनत अपनी रंग दिखा रहा है। और मैं पहली बार गोवा आया हूँ। गोवा अपने बीचेस के लिए, अपने फिल्म फेस्टिवल के लिए और अपने दूसरे डेस्टिनेशंस के लिए भी बहुत फेमस है, पर पिछले 2 सालों में ये पर्पल फेस्ट के लिए भी बहुत प्रख्यात होता जा रहा है, जो समावेशिता की ओर हमारे विकास की दशा और दिशा तय कर रहा है। और आमतौर पे लोग गोवा आते हैं अपनी छुट्टियां मनाने, पर हम आए हैं नए अवसर तलाशने। लोग गोवा आते हैं अपने नए साल की शुरुआत करने, पर हम आए हैं अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने। गोवा आना कई लोगों का सपना हो सकता है, परंतु दिव्यांगजनों के लिए ये सपनों के सच होने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर पर्पल फेस्ट के माध्यम से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच मिल रहा है, जो हमें हमारी पहचान दिला रहा है। और जो हमें हमारी पहचान दिला रहा है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आए हुए सभी पर्पल एम्बेसडर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सही मायनों में डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट हैं, जिन्होंने इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने का जिम्मा उठाया है, जो सुदूर गांवों से आए हैं और अपने कम्युनिटी की प्रेरणा है। और मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी कलाकारों को, सभी उद्यमियों को, सभी खिलाड़ियों को, सभी व्यवसायियों को और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ आकर इस फेस्ट को सफल बनाने में, इस आयोजन को सफल बनाने में सहायता की। आपका आना इस आयोजन को सफल बनाता है और आपका जिद और जुनून आपकी पहचान को इस मुकाम तक लाया है। मैंने इसमें कुछ 4 लाइनें लिखी थी कि जिद और जुनून आपसे बहुत कुछ करवाते हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सितारे भी ज़मीन पर लाते हैं। कमियों की कौन सोचे, हम तो अपनी खूबी में खोए रहते हैं, मौके तो बस मिले, उद्देश्य पूर्ति के लिए हम जी जान से जुटे रहते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स को कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया पे
सो यहाँ पर आए हुए सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जितना ज़्यादा हो सके इस फेस्ट के बारे में जागरूकता फैलाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ सकें। अभी तो पर्पल फेस्ट बस शुरू हुआ है, जब आगाज़ इतना शानदार है तो अंजाम कितना अच्छा होगा। इस शानदार आयोजन के लिए मैं ऑनरेबल डिसेबिलिटी कमिश्नर श्री गुरु प्रसाद पावस्कर सर को और सेक्रेटरी तहा सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और इस मन से अपनी बात रखने का मौका दिया। वैसे तो मुझे बहुत कुछ बोलना है, पर समय की भी अपनी सीमा होती है, रुकना तो पड़ता है, चाहे चाहते हैं जितनी हज़ार होती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। वो नहीं चल रहा वो लेके गया क्या माइक? ओके थैंक यू सो मच प्रथमेश। आपकी हिंदी इतनी शुद्ध थी कि मैं डर गया कि आपकी शुद्धता हिंदी की 2047 तक आप, मेरे को लगता है, हिंदी अध्यापक ज़रूर बन जाएंगे, कुछ विजन का हो ना हो। और जब मैं भी छोटा था तो मैं यही बात करता था, रेलवे स्टेशन को मैं बोलता था लोपद कामनी विराम स्थल, अपने टाई को बोलता था कंठ लंगोटी। तो थैंक यू प्रथमेश फॉर दैट वंडरफुल आइडियाज़। एंड अच्छा ओके, मेरे को बोल रहे हैं जल्दी करो, सीएम को जाना है। ओके ओके, थैंक यू। Let me tell you a small incident. This happened several years back, just a little small incident. There was a lady who had gone to meet Gandhi and Nehru. When she was asked what was the experience of meeting Gandhi and Nehru, so she said, when I met Nehru, I felt he was so important, he's such a big man. And they said, what about when you met Gandhi? She said, I felt so important, he made me feel so important, I felt so great. And the next speaker is our Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant, who makes everybody feel great. He's a leader of the masses. He's a leader who is a person who interacts and mingles with everybody. Please welcome on stage Dr. Pramod Sawant, a leader par excellence. Please call him on stage. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बात करके हमारे सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी वो आके गए हैं। राज्य मंत्री आठवले जी, उनकी भी बात यहां पे हो गई है। हमारे खुद के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर जिन्होंने इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के लिए बहुत प्रयास किया है, मिस्टर सुभाष फलदेसाई, राज्यसभा के सांसद मिस्टर सदानंद तानवड़े, हमारे गोवा के सभी बाकी एमएलएज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यूनाइटेड नेशन के सोम्बी शार्प जी यहाँ पे हैं। मैं फिर एक बार जितने सारे डेलीगेट्स जो नेशनल लेवल से यहाँ पे आए हैं, एनजीओ जो ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबिलिटी के लिए काम करते हैं वो यहाँ पे आए हैं, डिफरेंट बच्चे जिनके पेरेंट्स खास करके बच्चों को लेकर यहाँ पे आए हैं, डिसेबिलिटी कमीशंस फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स जो यहाँ पे आए हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई ऑल्सो वेलकम द इंटरनेशनल डेलीगेट्स वन हु कम फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर दिस इंटरनेशनल फेस्टिवल। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले आई कॉन्ग्रेचुलेट फॉर द यूनाइटेड नेशन यूएन फॉर एसोसिएटिंग विद दिस प्रोजेक्ट एंड रियली यू मेक दिस प्रोजेक्ट एज अ international levels, and although the different disability commissioners have participated, because of you only it is possible us to do this at international levels. Thanks once again. And definitely at the international best practices of the disability commissioner in future will also practice in Goa and in future in the India also. And the inclusivity, it is our vision for our nation future will do, definitely will continue with the same. आज तीसरा इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट होते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि डिसेबिलिटी में जितने सारे रोल मॉडल्स हैं वो सभी रोल मॉडल्स आज स्टेज पे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां देने की ज़रूरत है। दिव्यांग होते हुए भी खुद को साबित करना ये कोई कम बात नहीं, ये कोई कम बात नहीं है।
यानी खुद को साबित करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, ये बहुत बड़ी उन्होंने कोशिश की है और उनके लिए मैं गोवा सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इनके पेरेंट्स, इनके गाइड, इनके टीचर्स, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के लेवल पे जो डिसेबिलिटी कमिश्नर का उनका जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है, उनके डिफरेंट इश्यूज़ यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर ये सभी इश्यूज़ यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो पेपर सबमिट करेंगे द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के लिए, मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और इन फ्यूचर उनकी जो सबमिशंस हैं वो सबमिशंस हम सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इंक्लूसिविटी के लिए ये सबमिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। 2014 के बाद पहली बार यानी द पर्सन विद द स्पेशल डिसेबिलिटी, इनके लिए दिव्यांगजन, ये जो वर्ड माननीय मोदी जी ने दिया, दैट इटसेल्फ शोज द इंक्लूसिविटी उनके लिए करना, ये मोदी जी का एक ध्यास था, उनका एक जो प्रयास था। उन्होंने प्रधानमंत्री दिव्यांशु केंद्र जो हर एक स्टेट में स्टार्ट किया, उसी प्रधानमंत्री दिव्यांशु केंद्र से जितने सारे डिसेबिलिटी इक्विपमेंट हो या जितने सारे उनको स्किल लेवल के ट्रेनिंग हो, वही दिव्यांशु केंद्र की तरफ से सभी लोगों को दी जा रही है। इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के बाद ही गोवा में हम प्रधानमंत्री दिव्यांशु केंद्र खोल सके और गोवा के हर एक दिव्यांग की तरफ हम वहाँ तक पहुँच सके हैं। मैं हमारे जब पहला सरकार होगा कि पर्सन विद द डिसेबिलिटी, ये सेपरेटली डिपार्टमेंट दिव्यांशु लोगों के लिए हम चला रहे हैं और हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर मिस्टर गुरु प्रसाद पावस्कर ये बहुत ही अच्छा काम इस दिव्यांग लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पूरे गोवा के हर एक बीच, हर एक बिल्डिंग यानी उनके लिए फ्रेंडली करे, यानी इंक्लूसिविटी करे, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल आयोजन करने के बाद यानी दिव्यांगजन के प्रति हर एक स्टेट गवर्नमेंट अभी डिफरेंट फेस्टिवल्स करने लगे हैं। हर एक जगह पे इस तरह के फेस्टिवल होने लगे हैं। उनके सारे शॉप्स, उनके सारे जो जितने सारे इक्विपमेंट के शॉप्स हो, एनजीओ के शॉप्स हो, जो लोग यहाँ पे इस तरह के यानी डिफरेंट डिसेबिलिटी में काम करते हैं, वो खास करके गोवा में आए हैं। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि आप लोग जो इतने सालों से विदाउट एनी सपोर्ट जो काम कर रहे थे, आपके लिए सैल्यूट करना जरूरी है। लेकिन नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार बहुत ही अच्छी तरह से जो काम दिव्यांगजनों के लिए कर रहे हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ इस फील्ड में भी आगे आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। मैं हमारा द मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फलदेसाई एंड गुरु प्रसाद पावस्कर अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी एंड बाकी सभी ऑफिसर्स यानी गोवा में इसी तरह से बहुत ही अच्छा काम इस बार भी कर रहे हैं। इस बार के यानी पर्पल फेस्टिवल की थीम जो है यूनिवर्सल डिज़ाइन एंड शिफ्टिंग द नरेटिव्स, इस थीम सब लोगों तक पहुंचाने के लिए यानी हम काम करेंगे। इंक्लूसिव गोवा, इंक्लूसिव इंडिया एंड विकसित गोवा, विकसित भारत, यही आगे बढ़ाने के लिए यानी सबका साथ सबका विकास, ये थीम लेके जो मोदी जी और डबल इंजन की सरकार जो काम कर रहे हैं, इसी के तहत हर एक तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। मुझे लगता है कि हर एक डिसेबिलिटी का एक पर्सन जो स्टेज पे यहाँ पे आया है, इनके लिए मैं फिर एक बार आप लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दैट रिप्रेजेंट्स दैट डिसेबिलिटी, वही उस सब लोगों की यानी जो डिसेबिलिटीज है, प्रॉब्लम्स है, उनके प्रमोशंस है, वो प्रमोट कर रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस तरह से जो दिव्य निवास योजना हो या गोवा में बाद में इनके तरह की दूसरी सभी स्कीम्स हो, इसके लिए जो काम कर रहे हैं, मैं सभी एनजीओज और बाकी सबका बहुत बहुत फिर एक बार मैं अभिनंदन करता हूँ। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल में जो 3 दिन आगे चलेगा, इस 3 दिन में यानी ढेर सारे लोग पार्टिसिपेट होंगे, ढेर सारे लोगों को डिफरेंट गेम्स में अवार्ड मिलेंगे, डिफरेंट जितने सारे एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो सर्टिफिकेट्स और अवार्ड जीतने के लिए इन एडवांस में मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं फिर एक बार कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यानी मोदी जी का जो विजन था
यानी इंक्लूसिविटी फॉर ऑल, इसी के लिए इस तरह से इवेंट करने की हमें प्रेरणा मिलती है। हर तरफ देखने, जब हम सब लोगों की तरफ देखते हैं, इट इज़ एन इंक्लूसिव गोवा, इंक्लूसिव इंडिया, यही मैसेज देने के लिए यही इंटरनेशनल पॉपल फेस्टिवल हम मना रहे हैं। फिर एक बार मैं जितने सारे लोग गोवा में आए हैं उनकी गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसको निकालिए। Thank you so much, Chief Minister Ji, for your wonderful, inspiring words. And he's now taking a photo with all the purple ambassadors. No, what? Ritesh is handing over the memento to... Okay, so we do have a postcard unveiling. Today is World Postcard Day as well. Today, the Department of Post is proud to release a special cancellation to commemorate the International Purple Fest 2025. This special cancellation depicts the logo of the Purple Fest and is designed in purple color, symbolizing dignity, strength, and inclusiveness, the very spirit of this festival. Also, we have Shri R.P. Patil, Director of Postal Services, Goa region, for the release with the special cancellation. And we also have all our dignitaries on stage for releasing of the special cancellation of the postcard. So next, we are also dignitaries on stage. So, thank you. Ritesh to Sadanand sir and Falda sir to Wait. So the house-to-house survey has been launched for the first time in Goa, representing all 21 disabilities. Next, we also request the Hans Foundation, Sandeep Kaur, CEO, and Sudeep Sinha, Director, to come. So we are launching the Divyang Rath. So this is a mobile therapy van sponsored by Hans Foundation to ensure therapy, occupation, UDID, speech therapy, anything related to services for people with disabilities will be done. So this is the mobile Divyang Rath. So 2 mobile vans will be implied in Goa from now on. So thanks to all the